organized by the Department of Pharmacy, Maharashi Arvind University, in collaboration with Elite Expertise. Our speaker for today is Mr. Arif Mohammed Sir, who is the Director of Elite Expertise, holding a Master of Pharmacy, Clinical Pharmacy. He is an accredited consultant pharmacist, Australian Association of Consultant Pharmacists, and currently practice as a clinical pharmacist at Northern Health Hospital in Melbourne. Mr. Arif Muhammad is renowned for his excellent teaching skills and practice-based experience, which can significantly contribute to developing practice-based knowledge for learners. He has been practicing as a pharmacist in Australia for the past 5 years and has served as a preceptor to several students and intern pharmacists. His expertise include conducting home medication reviews, medication management services, and contributing to positive pharmacist interventions to reduce medication misadventures in both communities and hospital settings. Additionally, he is a pharmacist immunizer in Australia and a member of the Society of Hospital Pharmacists of Australia. Mr. Arif Mohammed completed his post-graduation in India in 2012 and subsequently moved to Malaysia, where he worked as a hospital preceptor and university lecturer for 4 years. His desire to advance his clinical expertise led him to pursue a career as a pharmacist in Australia. His sound knowledge of therapeutics and pharmacy practice is well reflected in his teaching. We are about to commence our event by lighting the lamp of knowledge and wisdom. This symbolic movement signifies the dispelling of darkness and the ignition of thoughts and enlightenment. Now, I would like to call upon all dignitaries for the lamp lighting ceremony. उसको निकालने पड़ेंगे सर कैमरा और थोड़ा सा निकालना और आप भी ले लो अरे नको मैं कर देता हूँ सर इसी में मेरे को नहीं चाहिए मेरे को पता है कैमरा पर लेके देखना चलो कैमरे को इतना छिड़ो एक बार बंद कर ओके Thank you, sir. Now, I would like to request Registrar Sir, Shri Gajendra Singh Yadav, sir, to honor our guest, Mr. Rakesh.
वायर का ध्यान रखना। Now, I would like to request Registrar Sri Gajendra Singh Yadav sir to honor our guest Mr. Rakesh sir with a bucket. Thank you, sir. Mr. Rakesh Khan sir graduated from Guru Gobind Singh College of Pharmacy, Yamunanagar in the 2007 to 2011 batch. He started his career with Sun Pharma, where he worked for 5.5 years as a medical representative and an additional year as an area sales manager. Currently, he is working with Elite Expertise as the marketing manager, raising awareness about KAPS exam, PEBC exam. Currently, Currently, he is working with Elite Expertise as the marketing manager, raising awareness about KAPS exam, PEBC exam, NAPLEX, PSI exam, GPSC exam, and the pharmacy practice scope in Australia, New Zealand, Canada, US, and Ireland.
Now I would like to hand over the program to Mr. Rakesh Khan, sir, please. Good morning, everyone. Hope you find this well. My name is Rakesh Khan, and I'm honored to be here today representing both myself and Elite Expertise. Before we start, I would like to express my sincere thanks to the college authorities, स्पेशली मनीष जमीनी सर, जिन्होंने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इस वेबिनार को कनेक्ट कराने के लिए अप्रूव किया। और आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आज इस इवेंट को देख रहे हैं। मैंने भी बी फार्मा किया है। आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं वो भी मोस्ट ऑफ देम जो है वो बी फॉर्म, एम फॉर्म और पीएचडी हैं। इन लोगों ने किसी ने भी अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में और इसके साथ साथ अपने एकेडमिक करियर में कभी भी एक ऐसा इवेंट नहीं देखा होगा। तब देखा किसी ने कि आप सबको कभी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया गया हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होता था कि हमें इंडस्ट्री टूर के लिए ले जाते हैं, कभी ना कभी कोई वर्कशॉप कंडक्ट हो जाती है कॉलेज में, पर कभी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया गया। तो आप सब लोग जो है वो बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको अपने एकेडमिक सेशन के दौरान ये डिसीजन लेने का मौका मिल रहा है कि आप आने वाले टाइम में कभी भी ओवरसीज जा सकते हैं और अपना करियर एज ए फार्मासिस्ट शुरू कर सकते हैं। इवन अगर आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है, आप लोग पीएचडी के लिए जाना चाहते हो, तो आप उसके लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ है, पर इस सेशन में नहीं होगा वो। आप फर्दर हमसे बाद में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी गाइडेंस देंगे। तो मैं बहुत ज्यादा इसको डिले नहीं करूंगा। अभी इस सेशन को समझिए थोड़ा सा कि ये जरूरी क्यों है आपके लिए। और ये जरूरी आपके लिए इसलिए है कि जब आप इसको अटेंड करेंगे तो अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तभी आप कोई क्वेश्चन पुट कर पाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप क्वालिटी क्वेश्चन पुट नहीं कर पाएंगे। और एक अच्छे सेशन की जो एक पहचान है वो ये है कि आप अच्छे क्वेश्चन पुट कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेशन जरूरी इसलिए है। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे कि ये सेशन मेरे लिए जरूरी नहीं है, मुझे तो कभी बाहर जाना ही नहीं है। अगर मैं भी आपकी जगह यहाँ पे बैठा होता तो मैं भी इसको बड़ा ही कैजुअली अटेंड कर रहा होता। पर जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो मुझे बी फार्मा किए हुए 12 साल हो चुके थे। 12 साल के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं यूट्यूब पे सर्च किया, मैं इलाइट एक्सपर्टाइज से जुड़ा। मैंने जुलाई में जो है अपने कैप्स के एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की और नवंबर में मैंने अपना कैप्स का एग्जाम क्वालिफाई किया, नवंबर 23 में। विद इन 5 to 6 मंथ्स जो है मैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर जाऊंगा विद फैमिली और अपनी परमानेंट रेजिडेंसी लेके यहाँ से। तो ये एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कुछ बच्चे हैं जो ओवरसीज जाने की सोचते हैं, वो लोग एमबीए, कोई अदर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए जाते हैं वहां पे और अपनी स्ट्रीम को कंप्लीटली छोड़ देते हैं। क्योंकि ओवरसीज जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप एक्स वाई जेड कुछ भी वर्क करो, आपको इनिशियली वेजेस इक्वलेंट ही मिलने हैं। अगर आप एक इंटर्न फार्मासिस्ट हो या आप कोई भी एक्स वाई जेड काम कर रहे हो तो आपको वेजेस इक्वलेंट मिलते हैं। पर जब आप तो एक कंप्लीट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हो तब वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि आप क्या अर्न कर रहे हो और क्या आपका डेजिग्नेशन है उस टाइम पे। एक व्हाइट कॉलर जॉब करने में और एक कैब को ड्राइव करने में बहुत डिफरेंस है। इनिशियली एक कैब ड्राइवर में भी हो सकता है कि एक फार्मासिस्ट से ज्यादा पैसे अर्न करे, और आफ्टर 15 मंथ्स जब आप एक कंप्लीट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो तो आपकी अर्निंग एक कैब ड्राइवर से 2 to 3 टाइम्स होती है। और आप अपनी क्वालिटी लाइफ भी इंजॉय करते हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय करते हो। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप इस सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सो दैट कि आपको पता चले कि ये हम यहाँ पे बताने क्या आए हैं। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे लिए जरूरी नहीं है तो सिर्फ इतना कोशिश कीजिए कि बराबर वाले को डिस्टर्ब ना करें, उसको सुनने दें। और अगर आपको लगता है कि मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाऊंगा, तो मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा आपको, जैसे मैडम ने बताया, मैंने 2011 में गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बी फॉर्म कंप्लीट की थी विद 10 सप्लीमेंट्री विद इन 4 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में पहली सप्लीमेंट्री लेने के बाद लगा कि यार कुछ भी नहीं है तो बड़ा इजी है, और सेकंड ईयर में 4 आ गई, कोई बात नहीं। थर्ड ईयर में जो है 5 आ गई। फिर फोर्थ ईयर में वो जब सारा बैकलॉग इकट्ठा हो गया तो फिर उसको फाइनल ईयर में सब कुछ कंप्लीट किया और बिल्कुल विदाउट एनी सप्लीमेंट्री मैं फोर्थ ईयर के एग्जाम्स में क्लियर हुआ और उसको भी जो है क्लियर किया फर्स्ट कैंपस से। तो ऐसा नहीं है कि ये सप्लीमेंट्री लेना एक महानता है।
इतना है कि अगर आप फार्मेसी में आ गए हो तो बिना नॉलेज के आप जीरो हो। आपका मार्केटिंग में चल जाएगा, 5-7 साल वहां निकाल लोगे, जिस दिन सेल्स का प्रेशर आएगा उस दिन लगेगा यार कुछ और शुरू कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि मार्केटिंग में जाने की बजाय कोई भी अदर ऑप्शन चूज कर लेना। आप एम कॉम कीजिए, टीचिंग में जाइए, आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए, आप ओवरसीज अपने करियर को देखिए। पर मार्केटिंग में आपको 2-3-5 साल तो बहुत अच्छा लगेगा। आप मैं खुद जब मैं सन फार्मा में था, मैंने 4 कंट्रीज के टूर किए हैं। कंपनी ने मलेशिया घुमाया, दुबई घुमाया, फिलीपींस घुमाया, चाइना घुमाया। बड़ा अच्छा लगता है। और 3 गोल्ड कॉइन भी कमाने का मुझे मौका मिला, 10-10 ग्राम के 3 गोल्ड कॉइन। पर ये सब जो अचीवमेंट्स है ये बड़ी शॉर्ट टर्म है। आपको लगता है कि आप अर्न कर रहे हो, अगर किसी लेवल पे आप उस लाइन को छोड़ते हो तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप 2025 में यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हो और आप 5 या 10 साल के बाद अपनी मार्केटिंग इंडस्ट्री को छोड़ते हो तो आप जीरो हो उस टाइम पे। तो आप अपने कोर करियर के साथ जुड़िए, जो आपका मेन प्रोफेशन है। आप 3-3 घंटे लैब में खड़े होते हो, लैब कोट डालते हो, गर्मी भी है वहां पे, सब कुछ है। आप इतनी मेहनत करने के बाद जो है अपनी बी कॉम की डिग्री को कंप्लीट करते हो। ये एक इजी डिग्री नहीं है कि आप इसको कोई भी कर सकता है। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग डिग्री है। इसमें आपको मल्टीपल स्किल्स सीखने को मिलती है। और आप एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि मार्केटिंग को एक अपना करियर ऑप्शन ना चूज करके आप कोई भी अदर विकल्प जो है वो चूज कीजिए। और जो लोग ओवरसीज जाने के इच्छुक हैं, वहां पे फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, सैटरडे संडे रोज है, पर आवर्स जो है आपको वेजेस मिलते हैं। अगर मैं बात करूं, $1 लाख कंप्लीट फार्मासिस्ट बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया में एक फार्मासिस्ट की सैलरी है, एनुअल सैलरी 53-54 रुपीज के आसपास डॉलर का जो रेट है। तो 53 लाख रुपीज के आसपास एक फार्मासिस्ट वहां पे अर्न करता है। और यहाँ अगर आप इंडिया में इसको कंपेयर करके देखते हो तो आप उसके आसपास भी नहीं हो। पर ये जर्नी जो है वो इजी नहीं है कि मैंने बोल दिया, मैंने आपको बड़े बड़े सपने दिखा दिए कि ये ओवरनाइट हो जाएगा। आपने एग्जाम पास किया, आप ऑस्ट्रेलिया, और 15 महीने आपने इंटर्नशिप के बाद ट्रेनिंग व्रेनिंग खत्म की और आप लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए और घर 25 लाख रुपए साल में घर भेज रहे हो। ऐसा नहीं है, ये टफ है, चैलेंजिंग है। हर लाइफ हर स्टेप पे जो है चैलेंजेस है। आपको इसके साथ साथ अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन जो है वो भी इम्प्रूव करनी पड़ती है। ये करने के बाद आपको इमिग्रेशन का जो पाथवे है वो थोड़ा सा लंबा है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा में आपको 40-45 दिन के अंदर डिसीजन आ जाता है कि आपका वीजा आ रहा है नहीं आ रहा है। इट विल टेक अप टू 17 मंथ्स, मोस्ट प्रोबेबली 100 to 120 डेज में जो है जिसको इनवाइट आता है उसको वीजा भी ग्रांट हो जाता है 100 to 120 डेज के बीच में। और वो इनवाइट आने के बाद का टाइम है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ओवरनाइट होगा, तो ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। तो आप अगर इस पाथवे में जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, पर रिजल्ट जो है वो बहुत ही स्वीट है। बहुत ही जर्नी थोड़ी सी खट्टी हो सकती है, पर जो जिंदगी का आनंद है वो बहुत अच्छा है। तो सबसे बेस्ट चीज जो इन एग्जाम्स की है वो ये है कि जब आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की कंट्री में लैंड करते हो तो आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी के साथ वहां पे मूव करते हो। और इवन अगर एक स्टूडेंट वीजा में एक बच्चा कोई आपका जानकार है जो वहां पे पढ़ रहा है, आप उससे उसका स्ट्रेस लेवल पूछ सकते हो कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, कि आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कितना कुछ बियर कर रहे हो। तो और ये चीज आपको यहीं से आप इस चीज को इंश्योर करके जा सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन एग्जाम्स के बारे में समझें। और जो लोग अभी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रहे जाते हैं कि अभी मैं मेरे पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं एग्जाम फिल कर सकूं और XYZ, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस को इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए कि आपको जब आप इस एग्जाम की तैयारी करने लगे तो आपको पॉजिटिवली जो है, पॉजिटिवली आपको वो एक्सपीरियंस भी काम आए। क्योंकि इमिग्रेशन में हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एज ए फार्मासिस्ट ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मार्केटिंग ज्वाइन कर ली और आप क्लेम कर रहे हो वहां पे मैं एज ए फार्मासिस्ट इंडिया में काम कर रहा हूँ। नहीं, अगर आप जरा सा भी 420 करते हो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे और जितना पैसा आपने खर्च किया अपने एग्जाम्स वगैरह क्लियर करने में वो सब रह जाएगा। तो कोशिश करो कि जेन्युइन प्रोफाइल के साथ चलो। और जो लोग आज नहीं, आज से 2 या 3 साल के बाद भी कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट अपना फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस प्रोक्योर कीजिए कि सो दैट कि आपको जब आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आप उसको एटलीस्ट अचीव कर सकें। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि इसको किसके लिए सुनना जरूरी है और किसके लिए इसको सुनना जरूरी नहीं है। ये
सबके लिए सुनना जरूरी है। अगर मुझे 12 साल के बाद इस एग्जाम को जानने की, समझने की और क्लियर करने की जरूरत पड़ी है, तो हो सकता है जिंदगी में आपको भी कभी ना कभी इस एग्जाम की जरूरत पड़े। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों की निराशाओं से आप कुछ समझें कि वो नहीं जा रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी नहीं करेगा। आप सिर्फ समझे, फिलहाल आप यहाँ पे आप अभी कोई भी, आप जैसे आपकी फैकल्टी को छोड़ के कोई भी अभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, मींस यू आर नॉट एलिजिबल राइट नाउ, बट वन डे यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो आपको उन सब के लिए जो है समझना जरूरी है। अगर आप अब यहाँ पे हम 1-to-1 सेशन भी कर सकते हैं, किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है हम उसको जेन्युइनली ले सकते हैं, पर अगर आप लोग इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा और आप दूसरे को भी डिस्टर्ब करने वाले हो। तो उसको बड़े ही पीसफुली सुनिए इसको, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। हमने भी कभी ज्वाइन नहीं किया ये, बल्कि जो सीरीज है वेबिनार्स की ये हमने ही शुरू की है इंडिया में। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए। जिसका भी जेन्युइन क्वेश्चन होगा, कोई पर्सनली भी अगर मुझसे सेशन के बाद में मिलना चाहता है वो मिल सकता है। मेरे पास आज समय थोड़ा सा कम है, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस सेशन को मैं शुरू कराना चाहूंगा। अभी इस सेशन में एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी एक, उस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। जिसका कोई भी क्वेश्चन रहेगा हम उस क्वेश्चन को बाद में लेंगे। अगर आप कर सकते हो, याद रखिए, लिख सकते हो लिख लीजिए। जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा वो हम बाद में लेंगे बनते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो हमारे डायरेक्टर हैं आरिफ सर वो भी लाइव आए, वो भी आपसे बात करें। ओवर टू नेहा मैम। माइक चेक कर Please play something so that we can check the audio. Hello all, a very warm welcome to all the distinguished pharmacists out there. This is Neha, Admin Manager of Elite Expertise. I would like to thank Maharashi Arvind University for giving us the opportunity to collaborate with Elite Expertise. And many thanks to Dr. Manish Jaimini and Dr. Manish Dev Indroya for giving this opportunity for us. And I would like to tell a few words about Elite Expertise. Elite Expertise is an online education platform who trains overseas pharmacists for KAPS, PBC, PTE, and recently launched exam OPRA as well. As we all know, these are all the license examinations for the pharmacist to become registered pharmacist in Australia, Canada, New Zealand. Our tutors are Mrs. Harika Bhimavarapu and Arif Mamad. They are working as consultant pharmacists in Melbourne. Both Harika ma'am and Arif sir are working as clinical pharmacists. They have overall experience of 5 years in clinical practice and 2 years of experience in teaching this KAPS and OPRA, KAPS, OPRA, and PBC. Almost 500 students have passed out from Elite Expertise. We have achieved 95% success rate in all the exams. Like as we all know, KAPS will be held thrice every year. That is in March, July, and November. We have almost achieved 95% success rate overall. We are glad to announce that many of our students are receiving invitations as well. One of our student, Beryl, got 491 visa, that is temporary visa, temporary resident visa recently, just 1 week back. We are happy to announce it. And that's it from my end. I would like to, Mr. Arif Mamad, who is CEO of this Elite Expertise, will give brief details about Elite Expertise, the coachings we provide, and the pathway to become a pharmacist in Australia, New Zealand, and Canada. And further, we'll have a question and one-on-one questions session. We'll meet you then. Thank you. And Ashutosh, please play the recorded video.
Hello, everyone. My name is Arif Mohammed. I'm one of the directors as well as the lecturers at Elite Expertise. So Elite Expertise is a online training platform where we give the training for all the licensing examinations for Australia, New Zealand, Canada, US, UK, Ireland, and so on. And myself, I'm a consultant pharmacist in Australia, as well as I'm a clinical pharmacist here in Australia. I'm working as a clinical pharmacist. Hello, everyone. My name is Arif Mohammed. I'm one of the directors as well as the lecturers at Elite Expertise. So Elite Expertise is a online training platform where we give the training for all the licensing examinations for Australia, New Zealand, Canada, US, UK, Ireland, and so on. And myself, I'm a consultant pharmacist in Australia, as well as I'm a clinical pharmacist here in Australia. I'm working as a clinical pharmacist in one of the hospitals known as the Northern Health Hospital in Melbourne. And at the same time, I'm also a consultant pharmacist here. So at first, I would like to share a few things with you regarding our Elite Expertise, who we are and what we do exactly. So I would like to share a slide with you guys. So, well, this is our website of Elite Expertise, www.eliteexpertise.com.au. So this is the homepage of our website, and just a brief background about the Elite Expertise. So we started Elite Expertise back in 2023, and like 2023 was the year that we have started Elite Expertise, and we have started with the training for Australian licensing examination. And we both are the teachers, so myself, Arif Mohammed, and Harika Bimawarpu. So we both are the directors and the teachers at Elite Expertise. So I'm working at Northern Health Hospital in Melbourne, and Mrs. Harika, she is working in Monash Hospital in Melbourne. So we both are the directors, and we both are the main teachers at Elite Expertise. And so these are the courses that we offer to our candidates. So one is the KAPS examination essential course. So this KAPS examination course is for those who are planning to move to Australia. So initially they need to sit for an exam that is known as the KAPS exam. But now they have replaced it with going to replace it with a new exam, which is known as the OPRA exam. So that I will explain you it in the upcoming slide. So they are going to replace with the OPRA exam starting from March 2025. So November 2024 will be the last batch for KAPS examination, but starting from March 2025, it will be replaced with the new exam that is known as the OPRA exam. So we also provide the training for the OPRA exam. We already started the batches for the OPRA exam as well. And at the same time, we also provide the training for the intern pharmacists, those who are doing the internship here in Australia. So intern pharmacist written examination as well as intern pharmacist oral examinations. And we started Elite Expertise back in 2023, and our first batch of Elite Expertise, they had their examination in July 2023, and with the success rate of 90% was the success rate of Elite Expertise in the first batch. So around 89 candidates have cleared their examination in July 2023. Then our second batch of candidates, they did their KAPS examination in November 2023 with their success rate of 94%. Total 99 candidates have cleared their exam in November 2023. Then our third batch was in March 2024. So total 121 plus candidates, they have cleared the KAPS examination in March 2024 with a success rate of 94%. And recently, in July 2024, again, the fourth batch was done, and total 130 candidates have cleared their KAPS examination in July 2024. So this is about the candidates, those who have cleared the KAPS examination from Elite Expertise. So all the candidates, they have cleared the examination in their first attempt itself.
And then at Elite Expertise, we also have all the free lectures. So we have got demo lectures which are available in our YouTube channel. And these demo lectures are also available on our website. So in case if you go to the Elite Expertise website, there you can see the demo lectures up over. Then if you click those the demo lectures, then you will come across all the demo lectures that are available, and you can watch the demo lectures. That with this you will come to know that how we teach, and also in this demo lectures we'll explain about what is the methodology that is implemented in the examinations, like what type of the questions that they ask in the licensing exams. So especially for the Australian licensing exam, as well as for the Canadian licensing exam, or for US NAPLEX exam. So the methodology, what they ask will be explained in detail in all those demo lectures. And then these are our testimonials from our students. So there are a lot of testimonials as well as on Google reviews. So once you can have a look through our testimonials and through Google reviews. And currently we are also providing the training for our intern pharmacists. So at the moment there are 40 plus intern pharmacists. They are getting trained with Elite Expertise. So we are providing the training for both the intern pharmacist written examination as well as for the intern pharmacist oral examinations. And we also have our Elite Expertise YouTube channel. So if you visit Elite Expertise YouTube channel, you will find a lot of videos that are available. So you will find videos of all the candidates, those who have cleared their KAPS examination. And you will also find a lot of information videos. And you will also find a lot of like clinical pearl videos, so where we have provided a lot of information. And you can also see the demo lectures up over there. So you will find a lot of information from Elite Expertise YouTube channel. So please visit our YouTube channel, that is Elite Expertise YouTube channel, and you can have a look through all the videos that are available in the Elite Expertise YouTube channel. And regarding the global opportunities for pharmacists is concerned, so like I can say that for pharmacists, there are a lot of huge opportunities that are available. So for instance, myself, I did my bachelor and master's in India, as I mentioned at the beginning. So after doing the bachelor's and master's from India, then I cleared the Australian exam, that is the KAPS exam, and I moved to Australia, and now I started working as a clinical pharmacist. So in Australia, New Zealand, US, UK, Canada, Ireland, so in all these countries, there is a huge opportunity for the pharmacist to practice. So especially as a clinical pharmacist, if you are planning to practice as a clinical pharmacist, then in all these countries, it provides a very good opportunity. So for Australia, the exam that you need to take is the KAPS exam for till November 2024. It is KAPS examination, but starting from March 2025, the new exam pattern will be OPRA exam. So this OPRA exam is common for both Australia and for New Zealand. So for both the countries, the exam is the same exam, that is OPRA exam, starting from March 2025. And for US, you need to sit for the NAPLEX exam. So before NAPLEX, you need to go through FPGE, and after clearing the FPGE, then you need to sit for the NAPLEX exam. And for Canada, it is the PBC exam. So I will explain in detail about these exams in the upcoming slides. Then for UK, you need to do the OPSAP, and for Ireland, it is the PSI exam. Okay. Then when it comes to the salary of the pharmacist in Australia as well as the US, in Canada, so here in this slide I have just briefly explained about the average salary of the candidate, that how much that they can get. So during internship in Australia, right now at the moment, so a candidate can get $27 per hour. It means that soon after clearing the first part of the exam, whether it is the KAPS or OPRA exam, after clearing that exam, you need to start doing the internship for 1,575 hours in Australia. So while doing the internship, for each hour per hour, you will be getting $27.
And once after becoming a fully licensed pharmacist, in Australia, the pay rate will be 40 to 45, or even it will go up to 50 or $55, depending on the place that where you are ready to work, and depending on your experience, it will go even up to $55 in Australia. In US as well, for a fully licensed pharmacist, the salary for a pharmacist, it ranges between $50 to $70 per hour. So that is the US dollars, $50 to $70 per hour. But for Australia, the salary that I have mentioned is the Australian dollar, so $40 to $55 per hour. And in Canada as well, so once after becoming a fully licensed pharmacist, the average salary will go up to $45 to $55 per hour. So this is about the average salary of a pharmacist when once they become a pharmacist in these countries. And for full length video, like if you want to know in detail about what is the hourly rate and how it is calculated and so on, so I did a video on YouTube. So if you guys can, if you guys are interested, then you can just have a look through the through Elite Expertise YouTube channel, where you can find about the what is the average salary for Australian pharmacist. And so this is the video that I made regarding the complete details about average salary for a pharmacist in Australia, where I have clearly mentioned about what is the salary that intern pharmacists that they get, and what is the salary that a fully licensed pharmacist, that is the fresher and experienced pharmacist, that they can earn in Australia. And also I have highlighted about what is the average salary of clinical pharmacist in Australia. So if you become a clinical pharmacist, then how much that you will earn in Australia. And at the same time, I also explained about the consultant pharmacist. So if you become a consultant pharmacist, then how much that you can earn in Australia. So everything that I have explained in this video. Then how should I start my journey for Australia? So in case, if you are planning to migrate to Australia, and if you want to become a pharmacist in Australia, then the first step that you need to do is you need to go for the document evaluation. So the first step is the document evaluation. So here you need to have, in order to do the document evaluation, you must have your passport, your university transcripts, and your pharmacy license. So if you have all these three documents ready with you, then you can start your document evaluation or the document verification process. So this document evaluation or the verification will be done by the Australian Pharmacy Council. Australian Pharmacy Council is the one that conducts this exam, that is the KAPS or OPRA exam. So from, as I mentioned, that from March 2025, it is getting changed to OPRA, OPRA exam. So Australian Pharmacy Council will conduct this KAPS or the OPRA exam. So in order to give the eligibility for you to sit for this exam, at first they will ask your documents. Okay? So they will verify your documents, and if they are satisfied, then they will give the eligibility for you to sit for this exam. And at Elite Expertise, we help all the candidates to do their document evaluation. So we help them like starting from the first step onwards for document evaluation, we help the candidates for their initial document evaluation. Then after doing the document evaluation, they will get the eligibility to sit for the exam. So we also help the candidates to prepare for the licensing exam. And after clearing the licensing exam, we also support the candidates that what are the next steps that they need to do. Okay. So after clearing the KAPS, what is the next step that you guys need to do? So everything that we will support our candidates. And regarding this pharmacy license, in case if you don't have the pharmacy license, then you need to write a letter to the Australian Pharmacy Council by mentioning that I have applied for the pharmacy license, but till now I haven't received the pharmacy license. Then Australian Pharmacy Council will still give you the approval to sit for the exam. So this is the official website of Australian Pharmacy Council. So in order to begin your process to migrate to Australia, so at first you need to create your candidate, you need to create your portal with Australian Pharmacy Council, and then you need to upload all the documents that are required. So the documents are nothing but the one that I have mentioned in the previous slide, that is your passport, your transcripts, and your license.
So you need to upload all those documents. Once you upload all the documents and you make the payment, then Australian Pharmacy Council, the case officer, will go through all the documents and they will give the eligibility for you to sit for the exam. So it roughly takes around 6 to 8 weeks time to get the eligibility to sit for the examination. And meanwhile, in case if the case officer need any further documents, then they will ask you to submit the other documents as well. So at Elite Expertise, as I mentioned, that all this process that we will help our candidates. So we will help our candidates to we will help all the candidates on behalf of our candidates. We will help to do the document evaluation so that they need not to worry about what document that they need to submit and how to get this initial skills eligibility to sit for the KAPS examination or the OPRA exam. So they need not to worry. So we will do on behalf of them, and just they need to prepare for the exam. And then, as I mentioned, that after you submit all the documents within 6 to 8 weeks of time, the case officer will give you the approval to sit for the KAPS exam. So the KAPS exam is going to replace with the OPRA from March 2025. So before that, if you do the document evaluation and if you are planning to sit for the November exam, then you can sit for the KAPS. Otherwise, you can go with the OPRA exam for Australia. So this is the new exam that they are going to conduct. Again, it is from the official website of Australian Pharmacy Council. So the new exam is known as Overseas Pharmacist Readiness Assessment. It is known as Overseas Pharmacist Readiness Assessment, that is OPRA, OPRA exam. So this is the exam that they are going to launch from March 2025. It means that all the overseas pharmacists, that is those who have studied from India or any other countries, so in order to become a pharmacist here in Australia, at first they need to sit for this exam. Okay. And at Elite Expertise, we provide the complete training for this examination, and like how we have got the success rate in the KAPS for the previous batches, for the 4 batches that I have displayed in the previous slide. So we are going to provide the complete training for this new program as well. Okay. And we already have started preparing all the content, and we are going to start our classes from this August 2024 for the new batch of OPRA. How to become a pharmacist in Australia. So I made a complete video. In this video, it is available, the full-length video is available in our YouTube channel. So once, if you can go to this video, there you can find what are the steps which are involved. That is how you need to register with APC. So here in the previous slide, I have mentioned the first step is to go and register with the Australian Pharmacy Council and then submit all the documents. And after submitting the documents, you will get the eligibility to sit for the KAPS exam. Okay. So all these steps in detail are explained in this video. So you guys can watch this video later on. So where we have, I have explained completely about the guide, the complete guidance, like how to register with Australian Pharmacy Council and how to upload all the documents and what is the fee for the exam. Okay, so KAPS exam fee and what are the other exams which are involved, that is the intern exams, and what is the fee for the intern pharmacist written exam as well as for the oral exam. So everything that I have explained in this video. So please go and watch this video later on. Then, so here, once you booked your exam through Australian Pharmacy Council, then the next step is to sit for the exam. So in order to sit for the exam, at first you need to know what is the exam pattern and what is the syllabus and how much that you need to score in the exam in order to pass the exam, because there are 2 papers in the KAPS. One is the paper 1 and the other one is the paper 2. Then you need to know that how much you need to score in order to clear this KAPS examination. So I made a complete full-length video for the exam pattern as well as what is the syllabus for the KAPS exam and what is the score, what is the passing percentage, how much that you need to score in order to clear this KAPS exam, okay, in both the paper 1 and paper 2. So everything is clearly explained during our orientation session that we have recently conducted for our July batch candidates. And we have recorded this video, and this video is also available in the YouTube.
Okay, so if you want to know that how the exam syllabus it will be, what topics are covered, and how the exam pattern it will be, how many MCQs will be there, and how much you guys need to clear in order to, how much you guys need to score in order to clear the paper. So everything is explained in detail in this video. So I recommend everyone to watch this video to know an overview about this KAPS exam, as well as the exam pattern, the syllabus, and how you get scored, and how much that you need to score in order to pass both the papers of KAPS exam, paper 1 and paper 2. And then, so after clearing the KAPS examination, so this KAPS examination, you can sit even from India. Okay? So in order to write this KAPS examination, you need not to come to Australia. So this exam, you can do it from India as well. So in India, almost all the major capital cities, they have got the center. So this exam will be conducted by Pearson. Okay, so Pearson will conduct this exam, and most of the cities in India, they have got the Pearson centers, and they are authorized to conduct this examination. It means that this first exam, the KAPS exam, you can clear from India itself. Okay. After clearing the KAPS exam from India, then you need to migrate to Australia. Okay, so in the second video, there is another video here. So what after the KAPS exam? So here I have clearly explained about what you guys need to do. So once after clearing the KAPS examination, so what is the next step? That is how you need to get registered in Australia as an intern pharmacist. Okay, so in order to get registered in Australia as an intern pharmacist, you need to get registered with APRA. Okay, so what is APRA? How to get registered with APRA? So everything I have explained in detail, and the full-length video is available in YouTube channel. So in case if you are interested to know about what is next after the KAPS, so how we need to get registered as an intern pharmacist, and how do we find the internship positions in Australia, so everything that is explained in this video. So you guys can go and watch this video where you will get the complete information. And to become a pharmacist in Canada, even Canada is also a very good country where there is a huge scope for the pharmacist to practice. And Canada is one of the countries where you can easily get the permanent residency when compared to US or Australia or New Zealand or any other countries, UK or any other countries. So getting a permanent residency in Canada is much easier than the other countries. So to become a pharmacist in Canada, again, there are few steps which are involved. Okay, so if you visit to our Elite Expertise website, so in the website we have, if you visit the website and if you go to the courses, in the courses you can see the PBC course. So PBC stands for the Pharmacy Examination Board of Canada. So PBC is the one that conducts all the exams for Canada. So if you visit to our website, there you can go to the PBC program or to the PBC courses, and once after going to the PBC courses, so just you need to scroll down the homepage and you will find what are the initial steps that are required. So what are the documents that are required to provide, or what are the steps which are involved to become a fully licensed pharmacist in Canada. So even for Canada, at first, as we are qualified, as everyone, as you guys are studying in India, and once after finishing your Bachelor of Pharmacy or finishing your PharmD, or even after finishing your Masters, so you need to write a basic examination that is known as the evaluating exam. So the first exam is the evaluating exam for Canada, PBC. So at first you need to clear the evaluating exam. Then after clearing the evaluating exam, then the next exam will be the qualifying exam. Okay. So the qualifying exam will be, it consists of the two types. One is the qualifying examination that is the MCQ based, that is the part 1, and OSCE, that is the part 2. So you need to clear both the qualifying examination. At first we need to clear the evaluating exam, then we need to clear both the part 1 and part 2 of qualifying exam. So once we clear all these examinations, then we will get a certificate from PBC that the candidate has cleared all the examinations. And based on that certificate, now you guys can start registering with the pharmacy board in Canada.
Okay. So all the steps, if you need to know what are the steps which are involved, so just visit to our website. So in our website, we have clearly mentioned about what are the steps that are involved for Canada PVC. And even for Canada, we started our PVC training courses. So we started our PVC preparation course starting from July. That is last July. On 20th of July, we have started our first batch of PVC program. So we also help the candidates in doing the documentation evaluation for PVC, and we also help the candidates in preparing their licensing examination for PVC. And also we do further support for the candidates once after clearing the examinations, how to find out the internship and how to get registered as a pharmacist up there in Canada or even in Australia. So how to get registered as a pharmacist. So everything that we will provide the complete guidance and support to our candidates. These are the few things that I wanted to share with you guys. So Elite Expertise is an online platform where we give the training for all these countries, for Australia, New Zealand, Canada, US, UK, Ireland. Okay, so you guys can visit to our website, as well as don't forget to subscribe to our YouTube channel, because in our YouTube channel we provide a lot of information regarding the current scenarios, what situation is going on in these countries, as well as we provide demo lectures. Okay, and also we provide the career pathways, that is how the pharmacist opportunities will be there. So if you visit to our YouTube channel, then you can find a lot of videos where I have made the videos especially for the pharmacist career pathways in Australia, especially in the hospitals, how a pharmacist can work in the hospitals. Okay, so like there are different opportunities in the hospitals. Like for a clinical pharmacist, they can work as in chemotherapy specialist pharmacist, in as well as in cardiology specialist, neurology specialist, antimicrobial specialist pharmacist, mental health specialist pharmacist. So there are different specialties for the pharmacist are available. And in most of the countries, like in India, especially in India, so we are more fascinated to work as a clinical pharmacist after finishing our PharmD or after finishing our masters in, especially in clinical pharmacy or in pharmacology. So we are more fascinated to work as a clinical pharmacist. So I have explained the complete pathways, like how to become a clinical pharmacist in Australia. So all the full-length videos are available in Elite Expertise YouTube channel. So please don't forget to visit to our YouTube, subscribe to our YouTube, and also we have our Instagram and our Facebook, and my personal LinkedIn is also there. So please subscribe to Instagram, as well as follow us on Insta, Facebook, and you can also send a request to my personal LinkedIn, so that you will develop the connections for the future. Okay, in case if you are planning to migrate to any of those countries, so you can develop your very good connections. Okay, so thank you so much. And now our team members, so Ashita, she will give her presentation. Okay, thank you so much, guys. That's all from Arif sir. Like he has covered everything. Now we can just switch into the one-on-one questionnaire session. Students or the faculty or Rakesh, you can just ask us the questions in your mind so that we can interact and clear your doubts as much as we can. Neha ma'am, I would like to brief the OPRA exam just in 2 to 3 minutes. Sure, Rakesh. Please continue. अभी आप सबने सर का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखा, इसमें सर ने ओपरा एग्जाम के बारे में बताया, ओवरसीज फार्मासिस्ट रेडीनेस असेसमेंट। ये एग्जाम जो है मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले जो एग्जाम का नाम था KAPS, नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, तो ये पैटर्न भी चेंज हुआ है काफी, और एग्जाम की स्कोरिंग एवरीथिंग हैज बीन चेंज। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जब यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो आपके लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एग्जाम रहेगा उसका नाम रहेगा ओपरा। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है, मैं सिर्फ आपको 1 से 2 वीडियो बताना चाहूंगा कि जब आप यहाँ से पास आउट हो जाए, आपकी 4th
ईयर की मीन्स की 8वें सेमेस्टर की जब डीएमसी आपके हाथ में आ जाए तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई करना है। आपकी हो सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो जल्दी भी दे देती हो, तो एक ट्रांसक्रिप्ट आपने अप्लाई करना है। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली एक सिंगल पेपर पे आपके 8 के 8 डीएमसी का एक कंक्लूजन है, इस बच्चे ने कब कौन सा सेमेस्टर पास आउट किया और ये इसका ओवरऑल पास है। एक सिंगल पेपर पे आपको आपका सारा रिजल्ट मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। जैसे ही आपकी 8 सेमेस्टर की डीएमसी आती है, आपको अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो आपकी शायद जयपुर में है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, आपको उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना है एज ए फार्मासिस्ट। और एक जो पासपोर्ट है वो आपके पास होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट्स, अगर ये तीनों है तो बैक हैंड में आपके पास सब कुछ होगा, पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट और आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ बाकी जितने भी हैं आपकी नेशनल आईडी से हमारा आधार कार्ड और हमारी जितनी भी डीएमसीज हैं अलग अलग सेमेस्टर, ये सब कुछ आपको एपीसी की वेबसाइट पर जाकर एक कैंडिडेट पोर्टल पे अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड होंगे। सबसे पहले आपको एपीसी को 810 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे करने हैं। आज ही 810 है, हो सकता है आपके टाइम में बढ़ भी जाए, मेरे टाइम में और ज्यादा थे, अभी इन्होंने कम कर दिया। मेरे टाइम में 1310 थे, 1310। अभी इन्होंने इसको कम कर दिया है, 810 कर दिया इसको, 810 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ये लगभग 56,000 रुपीज के 45,000 के आसपास कुछ रहेगा। इसके बाद आपको अपने एग्जाम बुक करना है। एग्जाम की जो फीस है वो है 2190, 2190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से वो इस एग्जाम की फीस है, जो लगभग इंडियन करेंसी में 1.25 लाख रुपए के आसपास है। इसके बाद जब ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे, क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर वर्कर्स का बोर्ड है एफ्रा, उस बोर्ड में आपको खुद को रजिस्टर करना है और साथ ही साथ अपनी इमिग्रेशन का पाथवे शुरू करना है, जिसको ईओआई बोलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको डिफरेंट स्टेट्स में अपनी ईओआई लॉन्च करनी है और अपना जो इंग्लिश का एग्जाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, जो आपको एफ्रा के रजिस्ट्रेशन से भी पहले करना है, मिनिमम 65 ईच। और अगर आप चाहते हो कि आपका बेस्ट प्रोफाइल हो, आपको जल्दी से कोई स्टेट इनवाइट करे, तो 79 इन ईच मॉड्यूल। अभी सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा है, पर अगर आप 3 महीने इसकी अच्छे से तैयारी करोगे तो 79 ईच लेके आना भी टफ नहीं है। इनवाइट आने के बाद जब आपको कोई स्टेट इनवाइट भेजती है, इनवाइट सबसे पहले प्री इनविटेशन आता है, उसमें आपने जो अपना डाटा फिल किया है, आपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपना पीटी का स्कोर, अपना जो आपका ओपरा का एग्जाम दिया है उसका आउटकम लेटर का जो नंबर आपने डाला है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। जब आपको प्री इनवाइट आता है, आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है, अपना ट्रांसक्रिप्ट, अपना इसके बाद जितना भी आपका जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया ओपरा, इसका आउटकम लेटर और साथ में पीटी का स्कोर कार्ड, ये सब कुछ अपलोड करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैच करेगा कि जो आपने फिगर्स पहले भरे हैं वो सारे मैच करते हैं, जो आपने क्लेम किया कि मेरे पास ये है। उसके बाद वो आपका जब मैच कर जाएगा तो आपको फुल इनवाइट देगा कि अब आप एलिजिबल हो फीस पे करने के लिए। उसके बाद आपने इमिग्रेशन की फीस पे करनी है डीएचए को, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद आपको वेट करना है कि आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा। जैसे आप वीजा की फीस पे करते हो, नेक्स्ट डे आपको S56 जो एक मेडिकल है, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए किसी भी ओवरसीज कंट्री में, वो आपको कराना है। वो उसका सेंटर में आपसे ही पूछा जाएगा कौन सा आपको नियर बाय पड़ता है, कौन सी मेट्रो सिटी नियर बाय पड़ती है। वो कराने के बाद आपको इस टाइम राइट नाउ जो है वो 100 डेज के अंदर अंदर जो है वो वीजा आ रहा है, वीजा ग्रांट हो गया है। उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप 15 दिन 30 दिन आप अपनी फ्लाइट बुक कराएं, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जो नहीं सीख पाया, ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड वीडियो, ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी हमारे इलाइट एक्सपर्टाइज के चैनल पर, तो आप उसको वहां भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप 1 to 1 ले सकते हो। हमारी नेहा मैम जो है वो भी ऑनलाइन है, एडमिन टीम से बैक हैंड में और भी लोग अवेलेबल हैं, तो जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो 1 to 1 होके पूछ सकता है। एक बार माइक चेक कर लीजिए कि इसमें आवाज आ रही है। प्लीज अनम्यूट द माइक। ओवर टू नेहा मैम। Thank you, Rakesh, for briefing about OPRA exam and students and sir, the faculty. Please feel free to ask us any questions in your mind, like
we are happy to answer for all the questions. Am I audible from this mic? Actually, the volume is little less, which I can't hear. Rakesh, can you please adjust the mic? Ma'am, now it's audible Yeah, now? yes, it is okay. What's the difference between KAPS in New Zealand and KAPS in Australia? Hi, dear. May I know your name, please? Dia Yadav. Hi, Dia. Like KAPS New Zealand and KAPS Australia. See, for KAPS Australia, we have a skill assessment with no particular experience is needed. And once skill assessment is done, we can directly sit for the KAPS examination, where we don't require any experience for KAPS exam, KAPS or OPRA. But for New Zealand, we at least required experience for 1 year. 1 year of experience is mandatory, and skill assessment is entirely different process for New Zealand. And once we get the skill assessment for, I'm sorry, once we get the skill assessment from New Zealand Pharmacy Council, we can just sit for KAPS examination. KAPS examination, and the visa process is little different for the KAPS and KAPS Australia and KAPS New Zealand. The major difference for New Zealand and KAPS is experience and skill assessment. Thanks. And one more question is, where is the KAPS exam center in India? We have many centers. Like if you search for PSN VUE near us, we can get the nearest centers. Like we have in South India, it is Hyderabad, Mumbai, Pune, and Bangalore. In North India, there are many centers. Like I'm not sure where are the major cities, but when we search for Pearson centers, those are all the centers for KAPS exam, KAPS or OPRA. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, what are the benefits of working as a pharmacist in Australia compared to other countries? Recording in progress. I'm sorry, I didn't. What are the benefits of working as a pharmacist in Australia compared to other countries? The benefits of like what I understood from the question is the benefits of working in Australia as a pharmacist comparatively to other countries. Yes, ma'am. See, in Australia, the experience is not required, and we can happily sit for the KAPS examination from our home country, and we can do we can directly migrate from our home country to Australia once we clear the KAPS examination. Once we migrate to Australia, we can search for the internships, and the pay rate is little huge comparatively to other countries, and the lifestyle, coming to lifestyle, it is very consistent lifestyle we can experience in Australia, and a number of opportunities, and the growth, the career growth and opportunities, and we South Asians, we Asians, what we accept, the weather, the temperatures are little the same for India and Australia. So there is no much difference in the temperatures and lifestyle. We can easily adjust to the Australian conditions, and we have very great scope, like clinical pharmacist, hospital pharmacist, industrial pharmacist, retail pharmacist, and whatnot. We have almost 11 kinds of branches for all these
pharmacists where we can fit upon our interest. And end of the day, all we need while working is the pay rate and the respect. The pharmacist has a huge respect in Australia. So that like the profession has a huge respect since it is healthcare. Pharmacist has a huge respect, and the pay is little higher when we become the independent pharmacist over there. These are all the benefits I feel, and comparatively, the minimum we have. If you want to migrate to Australia, the only basic requirement is KAPS exam, clearing the KAPS examination. That's it. And मैम one more benefit is also there. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो एवरेज जो लाइफ है वो 90 साल है, 90 इयर्स तक जो है अंग्रेज जिंदा रहता है। ऐसा क्यों है, जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ की लंग्स लाइफ बहुत अच्छी है। वो अच्छी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसका बेनिफिट जो है वो वहाँ की सेहत को मिलता है। वहाँ का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा है, जिसका बेनिफिट अब अगर कोई अंग्रेज 90 साल का हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसको नर्सिंग असिस्टेंस की जरूरत पड़नी है। इसीलिए वहाँ पे स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा से ही अच्छी रही है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इन कंट्रीज में हेल्थ केयर वर्कर्स की जो डिमांड है वो हमेशा ही रही है। और हम ऑस्ट्रेलिया में जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग है, सिर्फ दिन में 8 से 9 घंटे ही काम करने हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज जो है वो सैटरडे और संडे को ऑफ रहती है। तो आप अपना जो भी आपका पर्सनल लाइफ है आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो मैम। और अगर हम बात करें कि माइग्रेशन प्रोसेस में जो एक्सपेंस आता है वो अगर आप न्यूजीलैंड से भी कंपेयर करते हैं तो न्यूजीलैंड के एक्सपेंस में और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेंस में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है न्यूजीलैंड अप्लाई करने के लिए, और उसके साथ साथ आपको स्किल असेसमेंट करने से पहले अपनी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो पहले पूरी करनी पड़ती है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद ही आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। जो ओपरा का एग्जाम रहेगा आपके टाइम में, जब आप इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करोगे, पीटी तो आई थिंक मैं इतना श्योर नहीं हूँ पीटी के बारे में, पर जो ओईटी और आइल्स, आप 7 बैंड इन आइल्स और ओईटी में जो है आप यही क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो, तब जाके आप न्यूजीलैंड का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और एक सबसे जो आप इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, न्यूजीलैंड का जो एग्जाम है, अगर आप न्यूजीलैंड के लिए ओपरा का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको सिर्फ 2 चांसेस मिलेंगे। अगर आप 2 चांसेस में उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो तीसरा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। ऑन रिक्वेस्ट मिल सकता है, पर देयर आर ओनली 2 चांसेस टू क्लियर द ओपरा एग्जाम फॉर न्यूजीलैंड। और अगर आप खर्चे की बात कीजिए तो न्यूजीलैंड के अंदर ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको $2400 न्यूजीलैंड के जो डॉलर्स हैं वो पे करने हैं। एक कोर्स करने 3 मंथ्स का एक कोर्स है जो आपको ओकलैंड यूनिवर्सिटी से करना है। तो ये भी एक चैलेंज है उस एग्जाम को क्वालिफाई करना, वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को समझना। ये होने के बाद आपको इंटर्नशिप शुरू करने से पहले भी न्यूजीलैंड की फार्मेसी काउंसिल को $8500 के आसपास पे करने हैं। तो ये भी एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है जो इंडिया में रहते हुए फार्मेसी काउंसिल को पे करना बड़ा टफ है। अगर आप ओपरा के पाथवे से ऑस्ट्रेलिया को चूज करते हैं और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो ये माइग्रेशन प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाता है। आप वहां से न्यूजीलैंड माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स अगर आपके न्यूजीलैंड में रहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत कीजिए, यहाँ पे क्वालिफाइड होइए, यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनिए, उसके बाद आप वहां जाकर न्यूजीलैंड में माइग्रेट कर सकते हैं। और अगर आप न्यूजीलैंड में ये जो एग्जाम था ओपरा का एग्जाम, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, अब आप चाहते हो कि आप न्यूजीलैंड जाए, सडनली आपका माइंड मेकअप आपका चेंज हो गया कि मैं न्यूजीलैंड जाना चाहता हूँ, तो आप न्यूजीलैंड में जो प्रोसेस है अपनी स्किल असेसमेंट कराइए। आप अपने ओपरा के एग्जाम को वहां भी क्लेम कर सकते हैं कि मेरा ओपरा का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर है, और जो आपकी एग्जाम क्लियर करने से पहले की जो गाइडलाइंस हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है वो भी मेरी पूरी है,
तो मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जाम को ही आप मानिए, वो आपको उसके बाद ओके कर देंगे कि आपका रिजल्ट ओके है। तो अब आप 3 महीने के लिए जो उनका एक प्रोटोकॉल है जिसकी तैयारी करनी जरूरी होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप करने का, शुरुआत करने का कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि जब भी आपको इंटर्नशिप मिली आप तभी शुरुआत कर सकते हो उसकी। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंटर्नशिप शुरू होने का टाइम है, खत्म होने का भी एक पर्टिकुलर टाइम है, आप इन बिटवीन जो है बहुत ज्यादा ऑफ भी नहीं ले सकते। तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली दोनों कंट्रीज के बीच में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप खर्चे की बात कीजिए तो ऑस्ट्रेलिया से आप ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एक्सपेंसिव है न्यूजीलैंड में एज ए फार्मासी अप्लाई करना, और रिस्क भी उसमें ज्यादा है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट होता है। जबकि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपरा एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, आप जब तक आप चाहें आप अटेम्प्ट्स देते रहिए, उनको कोई एतराज नहीं है। ऐसा आपका लगना उनको क्या एतराज होना है। और अगर आप पीईबीसी की बात करते हैं तो पीईबीसी में भी लगभग सेम ही स्टेप्स है। आपको अपने डॉक्यूमेंट इवेल्युएट करने हैं, डॉक्यूमेंट इवेल्युएट करने के बाद आपको पीईबीसी का एग्जाम जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो क्वालिफाई करना है। उसके बाद एक ओस्की का एग्जाम है इनका, वो क्वालिफाई करना है। तो डिफरेंट एग्जाम्स हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में मुझे अच्छे से याद नहीं है कि सर ने वैसे बताया है, जब आप अपनी इंटर्नशिप करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1575 आवर की जो ट्रेनिंग है जिसमें लगभग 10 से 11 महीने का टाइम लगता है, उस ड्यूरेशन में भी आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। एक एग्जाम का नाम है इंटर्न रिटन एग्जाम और दूसरा एग्जाम है इंटर्न ओरल एग्जाम। इंटर्न रिटन एग्जाम जो है वो बेसिकली पियर्सन ही उसको कंडक्ट करेगा। जो बॉडी यहाँ पे हमारा पीटी का एग्जाम लेती है वही बॉडी वहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम लेगी। ये बेसिकली एक ओपन बुक एग्जाम है, आप इसमें अपने साथ नोट्स, हैंडआउट्स, बुक्स कुछ भी कैरी कर सकते हो, इंटरनेट को छोड़ के। मोबाइल गैजेट नहीं ले जा सकते। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जैसा ओपरा का सिस्टम है स्कोरिंग सिस्टम, वैसा ही उस एग्जाम का सिस्टम है। वो आपको अच्छे से असेस करेगा कि आपकी नॉलेज जो है वो इक्विवेलेंट हो गई है एक इंटर्न फार्मासिस्ट के नहीं। और बेसिकली जो रिटर्न एग्जाम है उसकी पास परसेंटेज बहुत अच्छी है, कैप्स के एग्जाम से अच्छी उसकी पास परसेंटेज है। मैक्सिमम बच्चे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो सेकंड एग्जाम है वो है इंटर्न ओरल एग्जाम। इंटर्न ओरल एग्जाम जो है बेसिकली ये जितना भी कुछ आपने ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर प्रैक्टिस के बारे में अपनी इंटर्नशिप के टाइम में सीखा है वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट जो ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी बोर्ड के लिए काम करता है वो आपके लिए एग्जामिनर बन के आएगा। वो प्रैक्टिकली आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको बेसिकली सिचुएशन देगा आपको कि वही पेशेंट बन के आया आपके पास, मुझे XYG प्रॉब्लम्स हैं, आपको मेडिसिन रिकमेंड करनी है। जो फार्मासिस्ट ओनली मेडिसिन हैं जिनको फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, वो आपकी जजमेंट देखेगा कि आपने कितने क्वेश्चंस पुट किए, आपकी काउंसलिंग कैसी है, कि उसने आपसे पूछना है कि आपने ड्राइविंग करनी है इसके बाद, तो क्या वो आपको ऐसी दवाई दे सकता है जिसके बाद ड्राइविंग अलाउड है नहीं है, तो आपने कोई ठंडा पानी पिया है। तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, काउंसलिंग पॉइंट है हर एक सिम्टम्स के, वो सब आपको याद होने जरूरी है, जो आपको इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपका जो मेन फार्मासिस्ट है, जो चीफ फार्मासिस्ट है, वो आपको सिखाएगा, आपकी तैयारी कराएगा, सो दैट कि आप अपना ओरल एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सके। इसके बाद आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी जिसमें आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर ढूंढना है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में अगर हम यहाँ इंडिया में एक एरर ढूंढते हैं, हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में कोई कमी निकालते हैं तो डॉक्टर हमें सुना देता है 4, मुझे ज्यादा पता है। वहां पे फार्मासिस्ट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को चैलेंज कर सकता है और डॉक्टर को वो चेंज करनी पड़ेगी प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि फार्मासिस्ट ने बोला है। हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल लाइन में और रिटेल फार्मासिस्ट लाइन में कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप यकीन करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फार्मासिस्ट को अटेस्टिंग अथॉरिटीज भी है, वो आपके सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकता है, अटेस्ट कर सकता है। तो ये यहाँ से डिफरेंस पता चलता है कि एक कितनी रेपुटेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया अपने फार्मासिस्ट को देता है। तो ये बहुत अच्छी कंट्रीज हैं विजिट करने के लिए। इन कंट्रीज में जब हम विजिट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये हमें हमारी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेके जाता है। अगर मैं वीजाज की बात करूं तो सबसे जो बेस्ट वीजा है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए उसका नाम है 190। ये एक परमानेंट रेजिडेंस का वीजा है। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया की किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कितनी भी बार मल्टीपल टाइम्स आप इंडिया विजिट कीजिए,
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप अपने फैमिली मेंबर्स को वहां बुला सकते हैं। दूसरा जो वीजा का टाइप है उसका नाम है 491 वीजा। बेसिकली एक टेम्परेरी वीजा है, टेम्परेरी परमानेंट रेजिडेंसी का वीजा है। इसमें एक क्लाउज है, बेसिकली हमें 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया को सर्व करना है। वो कैसे सर्व करना है, हमें जो रीजनल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का, उस एरिया में हमें 3 साल तक अपनी सेवाएं देनी है। एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट हमें वहां काम करना है। कंप्लीट फार्मासिस्ट बनने के बाद भी हमें रीजनल एरिया सर्व करना है 3 साल तक। बेसिकली हमारा जो रेंट है, जो हम वहां रहेंगे वो, और हमारी जो सैलरी है वो रीजनल एरिया से आनी चाहिए हमें 3 साल तक। जब हम इस क्लाउज को फुलफिल करते हैं तब हम कंप्लीट परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसी भी स्टेट में, किसी भी मेट्रो सिटी में, किसी भी रीजनल एरिया में। ये दो जो वीजा ऑप्शन है जो फार्मासिस्ट के लिए अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन है 407 वीजा। ये वीजा बेसिकली एक इंटर्न ट्रेनिंग वीजा है। ओपरा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम इस वीजा के लिए भी जा सकते हैं। इस वीजा के लिए हमारे पास हमारे पास इंटर्नशिप का होना जरूरी है कि हम किसके पास जाके, किस रिटेल शॉप पे, किस कम्युनिटी फार्मेसी में हम जाके अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, हमारे पास वो इंटर्नशिप के लिए जो क्लाउज है वो सब पूरे होने चाहिए। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है वीजा, पर इजी है। ये वीजा बेसिकली 2 साल के लिए लगता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी इंटर्नशिप खत्म करनी है और फिर अपना वीजा जो है वहां जाके कन्वर्ट कराना है। वहां जाके हमें 491 मिलना और इजी रहता है, जो एक रीजनल वीजा है। तो अभी किसी का और कोई क्वेश्चन है तो यस, कैन यू प्लीज कम, सो दैट की ऑडियंस भी आपको देख सके। सर पीएसआई के लिए पूछना था। नेहा मैम, Yes. व्हाट्स योर गुड नेम? समीर का मैम, ही वांट टू आस्क अबाउट द पीएसआई एग्जाम। Sorry. पीएसआई एग्जाम। PSI. यस मैम। Like it is for Ireland. We haven't launched this exam as of now. Currently we are providing KAPS, OPRA, PEBC, and we will soon launch NAPLEX and PSI exam as well. Feel free to like connect with us anytime soon within so you can have updates from us. पीएसआई एग्जाम के लिए जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 5 इयर्स की डिग्री है, जो फॉर्म डी है हमारे इंडिया में। बी फॉर्म प्लस एम फॉर्म को भी वो कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बी फॉर्म 4 साल की है और मेरी 5 साल 2 साल का मेरी एम फॉर्म है, तो वो उसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। यू शुड हैव ए फॉर्म डी डिग्री, कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस 5 ईयर डिग्री को वो लोग कंसिडर करते हैं। तो आई थिंक आप में से कोई फॉर्म डी कर रहा है यहाँ पे, तो देन यू आर नॉट एलिजिबल। What are visa options after clearing KAPS exam? मैंने अभी आपको बताया वीजा के हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। 190 जो एक परमानेंट रेजिडेंसी का वीजा है। एक वीजा है हमारे पास 491 वीजा। 491 वीजा एक रीजनल वीजा है जिसमें हमें ऑस्ट्रेलिया के रीजनल एरिया को 3 ईयर तक सर्व करना है। एक वीजा है 407 जो एक इंटर्नशिप का वीजा है। ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी इंटर्नशिप खत्म करके अपना वीजा कन्वर्ट कराना है, जो आपको 491 भी हो सकता है, या आपका स्किल्ड जो वीजा है, जो आप एक वर्क परमिट वीजा जिसको बोलते हैं, आप उसमें भी कन्वर्ट करा सकते हैं इसको। और एक चौथा जो ऑप्शन है वो 482 है। ये एक एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजा है। इसमें आपको एम्प्लॉयर वहां से स्पॉन्सर करता है। उस जितनी भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपको इंटर्नशिप दे रहा है वहाँ पे, वो सारा खर्चा वो बियर करता है। ये वीजा जो है बेसिकली टाइम टू टाइम बदलता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें। तो ये भी एक वीजा का ऑप्शन है 482 एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड वीजा। ये 4 ऑप्शन हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो बेस्ट वीजा के ऑप्शन है। आप चाहें तो स्टूडेंट वीजा पे भी वहां जा सकते हैं, पर स्टूडेंट वीजा में आपको क्लाउज ये रहेगा कि जो इंटर्नशिप है जो एक दिन में आप 8 घंटे ही कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा पे जाने के बाद आप इंटर्नशिप सिर्फ 4 घंटे ही कर सकते हैं एक दिन में।
वीक में ओनली 24 आवर्स इंटर्नशिप इज वही काउंट होगी, आपकी दूसरी इंटर्नशिप होगी काउंट नहीं होगी, आप कर भी नहीं सकते एथिकली। अभी अगर ओवरसीज एग्जाम्स को लेके अगर देखा जाए तो पीबीसी और जो ओपरा का एग्जाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एग्जाम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए एग्जाम है, ये जो एग्जाम है ये बेसिकली क्वालिफाई करना इजी है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। क्योंकि अगर आप यूएस के लिए भी जाना चाहें, नेपलेक्स जो वहाँ का एग्जाम है, नेपलेक्स भी जो है वो 5 इयर्स की कंटिन्यूअस डिग्री मांगता है। यूएस की कुछ स्टेट्स हैं जो बी फॉर्म प्लस एम फॉर्म को कंसिडर करती हैं, बट नॉट ऑल द स्टेट्स। तो अभी आई एम नॉट अवेयर ऑफ द स्टेट्स, बट कुछ स्टेट ऐसी हैं जो बी फॉर्म प्लस एम फॉर्म को कंसिडर करती हैं कि आप वहाँ पे नेपलेक्स का एग्जाम फिल कर सकते हो। और उसमें भी फिर एक बहुत लंबा टाइम क्लाउज है कि आपको एक लंबे टाइम तक उन्हीं स्टेट्स को सर्व करना है, आप अदर स्टेट्स में माइग्रेट नहीं कर सकते हो। कनाडा का जो पाथवे है लिटिल बिट थोड़ा सा टफ है, चैलेंजिंग। Hi, Rakesh. Yes, and Arif sir is also with us. Our director, sir, who is working as clinical pharmacist in Australia, is here. Thank you, Arif sir, for joining us. Yeah, thanks, Neha. Thank you. Thank you so much. Yeah, please continue, sir. Yeah, at first, I would like to thank Maharashi Arvind University, especially to Professor Manish Jaimani for organizing this event, and all the other staff members of Maharashi Arvind University for organizing this event. And yeah, like I just finished my work and I'm driving back to home. So like as I explained in the video, how to become a pharmacist in Australia and how to become a pharmacist in Canada, New Zealand, and other countries. And if you are interested to migrate to any one of those countries, like to Australia, New Zealand, Canada, US, or UK, then Elite Expertise will be always will be there to help you guys. And we'll be there to help you out in clearing your examinations, as well as we also provide the complete guidance, like how to, until you become a fully licensed pharmacist in these countries. So like Neha is one of our students. She cleared her examination, that is the KAPS examination, in November 2023. And Rakesh, who is standing up over there, who is live in front of you. So Rakesh also has cleared his KAPS examination in November 2023. They both cleared their examination in their first attempt. And the important thing that I would like to highlight you is KAPS examination. The last exam for the KAPS is November, the coming November 2024 is the last KAPS examination. And from March 2025, they are going to start a new exam pattern that is known as OPRA exam. So Elite Expertise is also providing the training for OPRA exam. And we also provide the training for intern pharmacist here. Once you become, like after clearing the first part of the exam, you also need to do the internship. So during the internship, you can, there will be 2 more exams. So we also provide the training for those examinations as well. So once again, I would like to thank Maharashi Arvind University for organizing this event, and our team members are there. Both Neha and Rakesh both are there. So if you have any questions, then you can ask to them. Yeah, over to you, Neha. Thank you, Arif sir, for joining, and it was like happy for us to join. You are here, and yeah, thank you so much. We'll continue with the Q&A session. So thank you. Okay, sure. And in case if any queries, then you can just text to me, and sure. I will just reply to them. Sir, one question. Just stay for 2 minutes. Is this Rakesh? Yes, sir. Just stay for 2 minutes. One student want to ask a few questions. I want to ask about the fees charged for the OPRA exam. So for fees charge and all those things, like it is 1,700 Australian dollars. Okay.
And we are providing the complete training until you guys clear your examination. So we will be once you enroll with us, so we will be there with you until you clear the examination. And all our students, they clear the exam in the first attempt itself. So it is 1,700 AUD, Australian dollar. Thank you, sir. Yep. Thanks, Rakesh. Thank you, sir. And We'll continue, sir. Yeah. okay. Yeah. Thank you so much. And once again, thanks to Professor Manish for organizing this event. Okay. Thank you so much, sir. And thanks to all the team members of Maharashi Arvind University for organizing this event. Okay. So in case if you have any questions, then our team members are there. So they will be more than happy to answer the queries. Okay. So thank you so much. Thanks for giving us this opportunity. Thank you, sir. Rakesh, we can continue the question and answer session. कोई सवाल है किसी का, कोई और पूछना चाहे अभी? Like someone asked about the exam fees just now for sir. I would like to add to sir that the coaching fee we provide, we provide is 1,700 Australian dollars. That will sum up around 93,000 in INR. Like a 10% GST we charge. And you can pay that in 2 installments. If you still have any questions about this fees and all, you can just reach out to us, admin team. We are happy to help you. And coming to exam fees, it is $810 for skill assessment, which makes up to 44,000. Once you get your skill assessment, you are eligible to sit for KAPS exam. The KAPS exam fee is 2,290 Australian dollars. That means 1,30,000 in INR. So hope I have given you the exact figure of exam and coaching fees. If you still have doubts, you can just ask me. No, thank you, ma'am. Thank you, dear. Okay, no more questions, ma'am. Thank you. Thank you everyone for giving this opportunity, and thank you Rakesh, and thanks to all the dignitaries who are sitting over there. We are very glad to have a webinar in your in this Maharashi University College, and we will scan some. We'll have some QR codes on there. Can students please scan those QR codes and follow us on Instagram, YouTube, and Facebook. Connect us via LinkedIn for more information and updates. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Now, I would like to request Principal Professor Dr. Manish Chamini, sir, to honor guest with a moment. Now, I would like to request HOD Professor Dr. Manish Indoria, sir, to present token of gratitude to guest Mr. Rakesh Khan, sir.
Thank you, sir. Now, may I invite Mr. Priyam Srivastava, sir, Associate Professor of Department of Pharmacy, to kindly come forward on stage to deliver the vote of thanks. I stand before you with a deep sense of gratitude and fulfillment. On the behalf of organizing committee, I want to extend my heartfelt thanks to everyone who has made today's seminar on global opportunities after B Pharmacy a grand success. First and foremost, I would like to thank our distinguished online speaker, Mr. Arif Mohammed, for sharing their invaluable insights and expertise. Your experience and knowledge have not only enlightened us, but also have inspired us to think beyond conventional boundaries and explore the vast possibilities that lie ahead in the global arena. I would also like to express my sincere thanks to the participants whose enthusiasm and engagement during the session has been truly commendable. Your curiosity and dedication to the making of most of the opportunity that a B Pharmacy can offer. A special thanks to our guest, Mr. Rakesh Khan, without whom this event would have been possible. Your unwavering support has been crucial in bringing this seminar to success. As we conclude, I hope that today's seminar has opened your eyes to the countless opportunities after B Pharmacy, from research and development to regulatory affairs, health management, and beyond. May the knowledge gained today empower you to pursue your dream with greater confidence and ambition. Thank you once again, and I wish you all the best in your future endeavors. Dear students, your sessional practical exam will start on 2 p.m. All the students, इस QR कोड को स्कैन करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी। सभी बच्चे QR कोड को स्कैन करके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
हो गया कर दे स्टैंड भी कैमरा स्टैंड बताना कैमरा पता नहीं अभी वो कर दे इसको वाइंड अप